और मेरी आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये पंक्ति शर्मा इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अनलॉक का ग्लो सीरम। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का सिलिकॉन प्राइमर। ये मेरी स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देगा, इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एंड इसे मैं अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ एंड एज अ आई प्राइमर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक HD फाउंडेशन एंड ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। इसे इस ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ Maybelline एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड न्यूट्रल। एंड इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट भी कर रही हूँ। सो गाइस इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इमेजिक का लूज पाउडर। देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का कॉन्टूर पैलेट एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टूर शेड। मैं सेम पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ ब्लश। सो गाइस ब्लश के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कलर मिक्स का ये हाइलाइटर। सो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ पंक्ति शर्मा का ये मेकअप लुक। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फोकल्योर का ब्रो पाउडर एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ सेकंड शेड और इसमें मेरा शेड नंबर है 1।
सो गाइस, ब्रोज को फिल करने के बाद अब आती है बारी आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉकल्योर का ये पैलेट एंड इसमें मेरी शेड है 01 ब्राइट लक्स। सो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल शेड। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये एंगल ब्रश एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी कार्बन शेड जो कि ब्लैक शेड है। देन इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी इंडियन रेड शेड। देन मैं इसकी यूज़ कर रही हूँ गार्नेट शेड जो कि पिंकिश कलर में है। देन इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ सैल्मोन शेड जो कि थोड़ा स्किन कलर की शेड है एंड पिंक शेड जो मैंने यूज़ की थी वो थी ये कलर सैल्मोन यूज़ करने के बाद जो मेरे ड्रेस का एक्चुअल कलर है लाइक ऑरेंज कलर है वो आ जाएगा, बिकॉज इस पैलेट में ऑरेंज कलर नहीं था। तो नेक्स्ट मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ ये एंगल ब्रश और अगेन यूज़ कर रही हूँ कार्बन शेड। सो इसके बाद मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश और यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड। सो गाइस, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बॉन्जोर का लाइनर। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक काजल। सो इसके बाद अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेगा का आईलैश कर्लर। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एमएल ब्रांड का मस्कारा। लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ मन्ना कादर की इन द शेड गिल्ट।
नेक्स्ट मैं पहन रही हूँ ये झुमके। सो गाइस, दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये पंक्ति शर्मा इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी के भी साथ, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, नीचे रेड बटन है, उस पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में ही छोटी सी घंटी है, उस पर भी प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। सो बाय, लव यू।